वहां पे वाटर पे हम लोग बात कर रहे थे। पीएच, पीके, पीओएच, that is continue from the last class. It is continue from the last class. वाटर पे हम लोग बात कर रहे थे, एंड इन वाटर 2 कंपोनेंट्स पे हम लोग गए हुए थे, के डी एंड के आई, डायरेक्ट डिसोसिएशन ऑफ वाटर। उसमें हम लोग क्या किए थे कि H2O इज डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू द H+ एंड OH माइनस। के आई में क्या हुआ था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O is dissociated into the hydronium ion and OH minus. Kd is equalized by 1.8 into 10 minus 16. ये था 3.24 into 10 minus 18. यहाँ तक फ्रॉम वेयर हम लोग यहाँ तक आए थे। यहाँ पे हम 17 के वैल्यू पे आए थे, बट व्हेन यू शिफ्ट द डिसमल, दिस वन, दैट इज द 1 minus 10 power 18. Then third constant is the Kw. Kw, that is the kinetics of water, and we can calculate at first from here, that is Kd molar value of H2O, that is 1.8 into 10 minus 16, 55.6. And when we calculate this value, it is converted into 1 into 10 minus 14. Likely, when you here, it is the if you calculate by this way, that is Ki H2O square minus 18 multiplied by 55.6 square. It again come into the 10 power minus 14. Either we calculate by this way or by this way. The value is 1 into multiplied by 10.14. That is the value of Kw, kinetics of water. It is the value of kinetics of the direct dissociation. It is the value of kinetics of ionization. Clear? And now, in this way, the H plus OH minus 40. Clear? Oh. Equilibrium constant. Equilibrium constant, that is represented by K. Equilibrium constant. And suppose
साथ साथ नहीं लिखिए, समझ में नहीं आएगा कभी, हम बार बार बोलते हैं कि पहले आप उसको समझ ले, फिर हम समझ देते हैं, उसको लिख लीजिए, साथ साथ लिखिएगा कभी समझ में नहीं आएगा. And equilibrium constant, here the reactants are converted into the products. Reactants are converted into the products. Reactant जो है वो convert हो रहा है product. Here it may be from 0 to 100%. Here it may be 0 to 100%. At the initiation, it is 0. Sorry, it is 100%, it is 0. At the final ending, it is 0, 100%, and it is 0. That means it deviated from the 0 to 100%. It is also deviated from the 0 to 100%. This one is represented by K1. This one is represented by K2. In some conditions, the K2 is represented by K1 minus T. It is also the representation used in some books. T that represents the time. That means K1 minus T. That is the time. Represented the time. And otherwise, you represented K1 or K2. That is the kinetics. At the equilibrium, it becomes nu K1 minus nu K2 is equal to 0. That is K equilibrium. That means this one and this one is equal. It represents that VK1 equal to rate of the K1 is equivalent to the rate of K2. That means at the equilibrium, rate of K1 minus rate of K2 is equal to 0. It is represented the rate of constant equilibrium, constant at the equilibrium. Clear? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Now OH minus, that is the K1, that is the K2. That means K1 proportionate to H2O, K2 proportionate to S plus OH minus. In other way, if it is not the in the condition of the water, it may be the reactant 1 plus reactant 2, product 1, or suppose it is the product 2 units of products. It is the 2 units of product. That means the K1, K2, K1 proportionate to P 2 molar, K2 proportionate to sorry R1 R2, that is P 2 units of molar value. कहीं प्रॉब्लम है यहाँ पर? 2 K1 by K2. K1 कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? sorry
और K1 by K2 और K1 by K2 और if we use this symbol H plus A minus, then Q1 by K2 equivalent to this one. In any condition, all are same. In any condition, the K1 by K2 is referred as equilibrium constant. Equilibrium constant and represented by symbolically represented by K equilibrium. अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज exclusively depended on the molar concentration of reactants, तो ये सही है कि गलत है? मान लीजिए आपसे नेट में पूछे सही, बहुत बुत्सी में एक नहीं रहता, उसमें क्या रहता है कि मोर देन 3 और 4 दिया होता है। बोलता है कि इसमें कौन कौन से गलत है, विच आर रॉन्ग या विच आर राइट, ऐसा देता है। तो एक बात पे पूछता नहीं है वो, मतलब इन वन क्वेश्चन एटलीस्ट 4 और 5 फैक्ट्स आर चेक्ड। 4 से 5 कम से कम फैक्ट को वो चेक कर लेता है एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो एक रहता है, लेकिन उसमें 4-5 फैक्ट उससे रिलेटेड वो चेक कर लेता है आपसे कि आप सभी को जानते हैं या हवाई में आ गए हैं। तो अगर ये चीज़ पूछा जाए और पूछा जाए कि क्या ये सही है कि गलत है, तो क्या जवाब दीजिएगा? ये सही है कि गलत है? गलत है, ये गलत है। और उसके लिए एक नया चीज आता है, वो है एक्टिविटी कोफिशिएंट। दैट इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, स्मॉल अल्फा, ए देकर एक्टिविटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फा, ठीक है। और एक्टिविटी कोफिशिएंट बोलता है कि द एक्चुअल मोलर वैल्यू associated or involved in kinetics, that is represented by gamma. That is represented by gamma, ठीक है। That means the value of gamma is always more than molar value or less than molar value. क्या होगा? ये मोलर वैल्यू से ज़्यादा होगा कि कम होगा? अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा,
It is always more than the molar value. It is always less than the molar value. It is equal to the molar value, or it may be more than or less than the molar value. Always less than the molar value. Always less than the molar value. Always less than the molar value. ये क्या होगा? Always मोलर वैल्यू से कम होगा, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन है, इस पे आधारित क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नेट में, रिपीटेडली गेट में आया हुआ है, नेट में आया हुआ है, और कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्चुअल पीएच ऑफ, व्हाट इज द एक्चुअल pH of pure water. Pure water कई बार पूछा गया ये. What is the actual value of pure water? So, at first, what is the molar value of the water? Pure water का molar value क्या होगा? Pure water का molar value क्या होगा? 7. सही तो है, तो इतना डर के क्यों बोल रही है तुम लोग भाई? इट इज जनरली 7. एंड इफ वी स्टडी द एक्चुअल मोलर वैल्यू, दैट मीन्स गामा इज ऑलवेज लेस देन द 7. लेस देन द 7. दैट मीन्स वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक. वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक. अब इसको जिस टर्म में वो पूछ दे, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल मार दीजिएगा बस चल जाइएगा तेल लेने 2 मिनट में. इट इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक. ये ऑलवेज क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक होगा. और जब भी ऐसा चीज वो पूछ रहा है, या कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 HCl, 1 m HCl, 1 m HCl, कभी कभी ये भी पूछ देता है. तो इसमें बहुत कैलकुलेशन में जाइएगा तो फंसने लगते हैं, क्योंकि जब वो चॉइस सेट करता है तो उसी ढंग से वो चॉइस सेट करता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो. अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आप तुरंत उसका रिप्लाई दे दीजिएगा. अगर नहीं समझ रहे हैं तो बनाते रहिए बैठ के आधा घंटा तक. बनाने में भी आ जाएगा, इसके सॉल्यूशंस हैं. लेकिन क्योंकि आप बायो साइंस के ग्रुप से जा रहे हैं, फिजिक्स वाला तो कैलकुलेट कर लेगा इस सबको, लेकिन क्योंकि आप बायो साइंस की तरफ से जा रहे हैं तो उसमें उलझने का संभावना रहता है. क्योंकि इसके एक्चुअल पीएच के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैलकुलेशन होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? कभी पढ़े हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? कभी पढ़े हैं? क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? है बी प्लस माइनस रूट अंडर करके कुछ है 4, हाँ 4, हाँ ए बी डिवाइडेड बाई कुछ है, हम भी मिस कर रहे हैं. उसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरफ जाना पड़ता है, तो इसीलिए उधर जाने की आवश्यकता नहीं है. मान लीजिए आपसे वो पूछ रहा है कि 1 m HCl, व्हाट इज द एक्चुअल, व्हाट इज द एक्चुअल मोलर एक्टिविटी, और इसको पीएच भी लिख सकता है, ऑफ 1 m HCl, 1 m HCl, 1 m HCl. तो दैट इज मोनोवैलेंट. ये क्या है? मोनोवैलेंट है. HCl ब्रेक्स इनटू द H प्लस प्लस Cl माइनस. H plus is released 0.001, that is 10 minus 3, 10 minus, and if you calculate the log value that it becomes 3, then it is the actual molar value. It is the actual molar value.
That means, it is the molar value. It is the molar value. That means if the actual pH is always less than the 3, ये जब भी होगा तो क्या होगा, 3 से कम होगा. या अगर इसको ऐसा कर दे कि 0.00 या 1m, if you calculate the 1m, that means इसका pH क्या हो जाएगा, आने लगेगा 1. अब तो इतना समझ में आ रहा होगा. If it is the 1m, that is 10 minus 1. That is the pH value is 1. Then in choice, one choice जरूर आपका होगा जिसका वैल्यू 1 से कम होगा. एंड इट इज जनरली, ये कैलकुलेटेड है इसलिए हम बतला देते हैं, याद रखिएगा. 0.86, इट्स वैल्यू इज 0.86. इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, 0.86. और ये वाटर जो है इसका आ जाता है 6.8. तो इसको याद रखिएगा. Then here the value is pH gamma molar value. pH gamma molar value, where the gamma is always less than the m, less than the molar value. Gamma is always less than the molar value. Now second one is ionizing, ionic strength. Ionic strength. Then the next one is the ionic strength. And ionic strength is represented by I/2, 1/2 summation mi Zi square. I/2 half summation mi Zi square. Because when you use the salts in aqueous solution or acid or base in the aqueous solution, they are commonly ionized. And sometimes it is necessary to obtain or calculate the strength, ionic strength of the solution. In this condition, the ionic strength is calculated by I/2 divided by half summation mi Zi square, where m is represent the molar value, Z represents ionic value, मतलब that means either acceptance of the proton or release of the electron. Either acceptance of the proton or release of the electron. That is the ionic value. It represents the summation. And in this way we calculate the ionic strength. Clear? A strong acid and a strong base. A strong acid and a strong base. At first, अगर बोला जाए तो which factor is responsible for the determination of acid and base? Which factor? pH is the measurement of the acidity and basicity. Which factor is responsible for the determination of the acidity and basicity? H plus and OH minus. H plus and OH minus are
responsible for determination of acidity and basicity respectively. Acidity and basicity respectively. Here the acidity represents reciprocal of H plus molar concentration. H plus molar concentration, that is or likely the basicity represents reciprocal of OH molar concentration that is POH 1 by OH minus or minus log OH minus. Clear? Now minus log H plus minus log OH minus. That is pH 7 plus. Clear? And here यहाँ पे शब्द क्या है? A strong acid and a strong base. A strong acid, what does it mean? That means the 100% molarity of H plus is ionized when we add the water. किसी मोलारिटी कंपोनेंट में, किसी सॉलिड्स में अगर हम 100 वाटर देते हैं, दैट इज द सॉल्वेंट, तो 100% अगर H प्लस उसका क्या हो जाए, आयनाइज्ड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड. उसी तरह से किसी बेस में अगर 100% OH आयनाइज्ड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस. दैट मीन्स द 100% ionization of H plus for any acid and OH minus for any base suggests that they are a strong acid or a strong base. A strong acid and
a strong base. Then here, in this condition, there is no problem. If it is a strong, it is always the 100% molarity is converted into the H plus ion. For example, just I am, अभी हम लोग देख रहे हैं इसको बहुत सारा HCl, it is the strong acid, H2SO4, that is the strong acid, HNO3, that is the strong acid, ये सारे strong acid है. तो मान लीजिए कि suppose HCl, its value is 1 m, it is the 1 m, and if present in the aqueous solution, then H plus is equal to the 1 m plus Cl minus equal to the 1 m. That is the equal value is released in the water. It represents, it is the strong acid. And when you calculate, if you any type of examination is question is asked in the examination, where the dissociation is required for the strong acid and the strong base, then the dissociation value of the H plus or OH minus is always equal to the molar value of the acid or base. Clear? If it is base, suppose this one, that is Ha plus OH minus. And if it is the 1 m, this value is 1 m, this value is also 1 m. That means they are the strong acid or a strong base. Clear? Weak acid and weak base. यहाँ पे क्या है? Weak acid and weak base. So when the acid or bases are weak, then the proportionate release of H plus or OH minus is respectively less than the molar value. Respectively less than the molar value. And here the acidity or alkalinity due to the water has also effect on the total pH value. Clear? हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एसिड और बेस वीक है, तो जैसे बोला गया कि अगर स्ट्रॉन्ग है तो 100% H plus and OH minus are ionized, and if the H plus or OH minus are ionized, then they have effect on the pH. That is the concentration of H plus and OH minus in the solution. But if they are weak acid and weak base, तो क्या बोला जा रहा है कि वीक एसिड और वीक बेस, इस यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग में क्या था कि 100% आयोनाइजेशन हो रहा था किस चीज का? H plus और OH minus ion का. And that H plus and OH minus ions are responsible for the determination of the pH value. आयनाइज जो फॉर्म होगा H plus और OH minus, वो किसको डिटरमाइन कर रहा है? pH वैल्यू को. बट हियर इफ द एसिड एंड बेस आर वीक, अगर ये क्या है? वीक है, then the 100% ionization is not possible. In this condition, commonly HA A minus, that is 100% ionization is not possible. 100% ionization of the H plus is not possible. And here the acidity created due to the acidity or ionization of the H plus ion created due to the water has also effect on the total pH of the solution. Solution का जो total pH होगा, because the component has the capacity of the ionization, suppose the H2SO4, then H2SO4 is itself responsible for the release of the 2 units of H plus ion, 2 units or 2 moles of the H plus and 2 molecules of the H plus ions. At the same time, the H2O has also capacity to release the 1 H plus ion. That means the water is also capable to produce the
H plus ion. And in weak acid, if it is in the weak form, then the component or ionization of the water itself has also effect on the total ionized H plus or OH minus ions. Clear? But in the strong acid and a strong base, the ionization of the water has no इफेक्ट, वहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं है. अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहाँ पे वाटर का जो आयोनाइजेशन की अपनी प्रॉपर्टी है उसका इफेक्ट नहीं है. वाई सो हियर हम क्या लिख रहे हैं, HAS3O इस फॉर्म में हम लिख रहे हैं. वहाँ पे हम क्या लिखे थे, H प्लस प्लस A माइनस, बट हियर H3O देन A माइनस. This one is the conjugate base, this one is the conjugate acid, this one is the acid. Clear? And if, for example, here you use the KOH, that inorganic base. Here it is the K plus plus OH minus. But if we use the organic bases किसको बोलेंगे हम? Has the amino group, has the sorry. This one is the conjugate base. Here it acts as a conjugate acid. Here is the conjugate acid. Here is the conjugate base. This one is the weak base. Weak base. Ammonium hydroxide. For example, another is the. It is the weak base. It is the weak base. And here A minus that is the HA. This one is the K value. This one. Clear? Relationship between Ka and Kb. Ka means kinetics of acid and Kb means kinetic of base. Relationship between Ka and Kb. That suppose here the Ha plus H2O K1 और K1 ही रखा जाए इसको, H3O2 plus A minus
conjugate acid, act as the conjugate acid, conjugate base, conjugate acid, conjugate base. Here A plus H2O, sorry, A minus, AH plus OH minus. Suppose here is the weak acid, it is associated with the H2O, form the H3O2 plus A minus. Again A minus is associated with the, here it acts as the base. Here it acts as the acid. It is also a weak base. It is associated with the H2O converted to the HA and OH minus. Clear? And here sorry, S3O2 plus A minus HA H2O. AH OH minus A H2O. Clear? When we neutralize in the form of the H2O, because H2O has itself a constant. H2O is itself a constant kinetics. Constant kinetics. H2O as a constant kinetics. Then K1 K H2O S3O plus A minus HA likely AH OH A minus. Okay? यहाँ पे है क्या कि K1 and K2 H is neutralized. H को जैसे आप न्यूट्रलाइज करते हैं यहाँ here one H2O is neutralized and here one H2O is neutralized. ये दोनों क्या हो गया यहाँ से न्यूट्रलाइज कर दिया and we get this one that K1 H2O H plus molar value of the H plus minus A minus HA AH OH minus K1, and here if it converts here, this one is the converted into Ka and this one is converted into Kb. Kinetics of acid and kinetics of base. Okay? And when we calculate it at the equilibrium, then it becomes Ka by Kb. Ka by Kb, and this one divided by this one. That means
this one neutralized, this one neutralized. Clear? Then one is directly proportional to the H plus and another is directly proportional to the OH minus. It is the same observation as we observed in the earlier. Clear? And this kinetics, if it is the Ka and Kb, it again equivalent to the K equation. Clear? इसी को रखो. S3 था ना. Yep. Now the pH. If you determine the pH and pH ही ना है, ठीक है. That is H plus root under K A molar value of HA. Molar value of HA. सेकेंड है OH minus, that is basic KB molar value of A minus. That means pH P Ka plus P Ha divided by 2 P OH बराबर P Kb plus P A divided by 2. It is for the weak acid and weak base. If in your question it is asked that the following X is the weak acid or X is the weak base, then you use this formula only. Otherwise, if it is not mentioned that it is weak, you directly use the 100% ionization value. Clear? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है. चलिए ऑफ करिए.